Hi everyone, welcome back to Super Kalam. Today we are starting with a very interesting revision class. This class is not just going to help you in revising the entire chapter of amendments of M. Lakshmikant book in Indian polity, but it is also going to make you understand how we can solve the four marker questions that can come in the prelims examination. Even from the perspective of mains, this class is going to be a very helpful input when it comes to Indian polity. तो अगर आपने ये क्लास मेरे साथ कवर कर ली, trust me on this thing that you will not go back to the chapter in the book in Indian polity. Why? Because everything from A to Z on amendments will be covered here today. So you have to make sure you have your registers of Indian polity, you have your pen, and also we are going to solve some PYQs. So make sure that you are ready for that. Okay, let's get started without any delay. शुरू करें आज का सेशन. चलो, let's get started. From 42nd to 86 to 99th, all the amendments we are going to cover, and also we are going to cover the Supreme Court judgments. जितने भी जजमेंट्स आए हैं अमेंडमेंट्स को लेकर वो सब भी हम कवर करने जा रहे हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी ऑल इन ऑल a very full-fledged power packed class. When we talk about amendments, first we need to understand whatever chapter you are studying in whatever subject, make sure you compare the PYQs of the last 5 years from that chapter. Because when you understand the previous year questions, how many questions were asked from this chapter, how many weightage, what is the weightage of this chapter, when you understand this, what kind of questions are being framed from this chapter, then it becomes more and more simple to retain the chapter or to prioritize the particular chapter. For example, amendments, if we look at this chapter, we can cover it in the beginning also or at the end also. Why? Because only two questions will be asked. That means four marker question पूछा जा सकता है. And in mains, a 10 marker question can be asked from amendments. This chapter is chapter number 11 in the recent 7th edition of M. Lakshmikant book. अब यहाँ पर जब हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, इट इज अ चैप्टर विच इज रिलेटेड टू मोर ऑफ करंट अफेयर्स, करंट जर्नल अवेयरनेस. व्हाई? बिकॉज every year there are one or the other awareness amendments taking place in the newspaper. There are different kind of judgments which are passed, new judgments, new cases are solved by Supreme Court, High Court. तो नए नए amendments निकल कर आते हैं, and that is why it becomes important to be on our toes when it comes to this chapter. ये इसकी relevance है. क्योंकि अगर मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन, इवन इफ दे आर नॉट आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन, दे कैन आस्क एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन. दे कैन आस्क वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द अमेंडमेंट्स एंड दे विल आस्क यू टू रिलेट इट to the amendment which was passed or the Supreme Court judgment in which that particular amendment was passed. तो इस तरीके के questions can also be asked, है ना? तो that is why it is very important to study this chapter with current affairs. अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ what exactly is the meaning of amendment, because if you don't know the meaning of amendment, then it is not of a use to study this chapter. Amend means to correct something, right? तो amendments का मतलब क्या होगा? See, amendment means to correct something in the constitution. Constitution has been written, but it is not a something that has been stamped and it cannot be changed. According to the changing needs of the society, upgradation in the society, there are certain few things which need to be changed or which need to be corrected or amended. So when we are amending certain provisions or parts of the constitution, that means the amendment of the Indian constitution. And I have tried to make a full fledged note. एक ही माइंड मैप के अंदर पूरा चैप्टर कवर किया है मैंने आपका. दिस entire chapter I have covered in just one mind map. So it will become very interesting, don't you worry at all. Like any other written constitution in the world, Constitution of India also provides for its amendments. Why? So that we can change ourselves as per the changing condition and needs of the society, of the world. When we talk about amendment, there is one single article that comes to our mind, which is Article 368. Article 368 is in part 20 of the Constitution. You have to remember that it deals with the powers of Parliament to do what? To amend the Constitution. Power of Parliament to amend the Constitution. Article 368. But there is a condition. If we give this power to the Parliament to amend the Constitution, Parliament can use the power for its own benefit.
So to make sure that we are controlling the parliament to not make unnecessary changes, or to not hamper with the or temper the rights of the citizens, we have put a condition, which is the basic structure doctrine. You can amend the provision of the constitution, but without changing the basic structure, which we got in the Keshavananda Bharti case in 1973. So Keshavananda Bharti case mein for the first time basic structure was talked about, because here in this case we said कि there are certain pillars on which the constitution is standing: fundamental rights, fundamental duty, DPSPs, judicial review, right, welfare state hona, secularism, sovereignty, integrity. These are certain pillars on which our constitution is built up. So if the parliament has to make certain amendments in the constitution, it has to make sure that the basic structure is not touched. Okay, so for the protection of democracy and for the protection of citizens, this particular clause was added by Keshavananda Bharti case. That point is clear. Now, since 1951, there have been several amendments. 1947 mein we got the independence, and since 1951 we got several amendments. So one by one, we are going to revise all those important amendments. Let's talk about the First Amendment Act 1951. So it added the ninth schedule. Why? To protect from judicial review. Now, what happened here? I'll tell you. Basically, why? What was the reason of adding First Amendment Act in 1951? To remove certain practical difficulties which were created by Supreme Court in several cases. There was Kameshwar Singh case, Romesh Thapar case. तो इसमें क्या हुआ था? These were the cases dealing with zamindari system. These were the cases dealing with freedom of speech, state monopoly of trade, etc. Because 1947 में we got independent, तो उसके बाद भी जामींदारी सिस्टम के कुछ एसेंस तो इंडिया में रह ही गया था, राइट. देन दी देयर वर अदर केसेस लाइक the freedom of speech related case, because recently we got independent, so all these things had to be catered to. That is why the first amendment came. It basically added the ninth schedule. Why? To protect the land reform system. Okay. And also it provided for saving of laws which are for the acquisition of estate. You cannot just acquire estates or land as per your whims and fancies. There would be laws to protect the acquisition of estates, and for that this new amendment was brought forward to protect the land of people, because partition happened na 1947 ka partition sabko yaad hai. Many people became homeless, right? Many people left India, but their lands were here. Many people left Pakistan, but their lands were over here, over there in Pakistan. They came to India. So to protect the land estates, this particular amendment was added. It also empowered to make special provisions for socially and backward classes people, and it also added three more grounds for the restriction of freedom of speech. So even freedom of speech, fundamental rights, they come with their exceptions, they come with their restrictions. Even fundamental right के ऊपर भी restrictions लगाई जाती हैं. So three restrictions were added on fundamental right. What were those restrictions? Public order, friendly relations with foreign states, and incitement. If your speech includes something which can destroy our relationship with foreign states, then you will be restricted. If your speech disturbs the public order, your speech will be restricted. If your speech or whatever you are saying is going to incite people against the nation, then it will be restricted. ये तीन terms add किए गए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. एंड देर वर सर्टन आर्टिकल्स फॉर दिस विच वर एडेड. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 31, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 31A and article 31B. These articles were inserted. All right, so this is about the first amendment act. Now coming on to the next amendment act, which was the second amendment act. So the 42nd अमेंडमेंट एक्ट. जब आप 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हो, दीज आर द की मेजर अमेंडमेंट्स विच वी आर डीलिंग विद. ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. व्हाट हैपेंड हियर? यहाँ पर क्या होता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. ऐसे तो काफी सारे हुए हैं, बट मेजर जो PYQs में रिपीटेडली पूछे हैं, वी आर गोइंग टू डील विद देम. ओके, so in the 42nd amendment act, it consisted of 59 clauses. The most number of clauses were added here, and that is why it has been termed as the mini constitution. Okay, these 59 clauses brought about several changes in the constitution. For example, if you look at our preamble, agar aap preamble ki taraf dekho, three words were added in the preamble because of 42nd amendment act. Anyone who can identify in the preamble what were the three words which were added?
Yes, it was socialist. Socialist word was added. Secular word was added. Then integrity word को इसके अंदर add किया गया. These were the three words which were added in this in the preamble because of 42nd Amendment Act. ये point आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से याद रखना है. ठीक है, यहाँ तक point clear हो गया सभी को. Integrity of the nation was also added. So these were the three words which were added. अब यहाँ पर मैंने इसको note down भी किया है, तो आपके notes में भी ये part आ जाना चाहिए. It also added fundamental duties. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. There were students who I gave questions. कल हमने fundamental duties पे कुछ questions दिए थे, and many students incorrectly marked several questions because they were confused कि भाई fundamental duties were added by which amendment act. They were writing 44th amendment. No, it was 42nd amendment act 1976. Part 4A में इसको add किया गया. You have to tell me in the comment section कि from which nation did we take the inspiration while framing fundamental duties. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, बट यू नीड टू बी होलिस्टिकली प्रिपेयर्ड व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग पॉलिटी, है ना. तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हिच वाज द नेशन व्हिच इंस्पायर्ड अस टू फ्रेम फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपको पता है, वी ऑल नो दैट प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द कैबिनेट, राइट. But this clause was added by 42nd Amendment Act 1976. So this amendment made the president bound by the cabinet's advice. Another important point. Then it also added three new DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को भी ऐड किया. इसके अंदर तीन ऐड किए थे नए. ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे विच वर द थ्री न्यू DPSPs, बिकॉज सम ऑफ द रिसर्च वर्क यू ऑल्सो हैव टू डू ना, एंड यू कैन डू दैट रिसर्च वर्क विद सुपर कलाम एज वेल. तो सुपर कलाम के साथ भी आप वो रिसर्च वर्क कर सकते हो, राइट. सो वी कैन आस्क सुपर कलाम कि व्हाट वर द थ्री न्यू DPSPs added by 42nd Amendment Act of 1976. ठीक है, तो यहाँ पर हम सुपर कलाम से पूछ लेते हैं. सो वॉट एवर वी आर प्रिपेयरिंग, वी कैन आस्क क्वेश्चंस, वी कैन लर्न थ्रू सुपर कलाम. वी कैन ऑल्सो व्हाट वी कैन डू कि वी कैन प्रैक्टिस MCQs. अब आप देखोगे आर्टिकल 39, 39A, 43A, 48A, ये सारे DPSPs, ये जो तीन मेजर DPSPs है ना, 39 के अंदर ही 39A आता है, दे वर एडेड. एंड सी, इट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग अस हाउ it is known as the mini constitution because fundamental duties, DPSPs are getting added. So it is acting as a mini constitution itself. Now I can practice MCQs. Give me, let's say, 2 MCQs on fundamental duties. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर 2 MCQs मैं पूछूंगी एंड आई कैन प्रैक्टिस इट देन एंड देयर. तो आफ्टर द क्लास ऑल्सो देर इज अ होमवर्क दैट आई हैव गिवन in the comment section and in the description box. You have to solve that homework and you have to tell me your scores. और solve करने के बाद ना अपना progress भी देख सकते हो. How many questions you have practiced, what is your rank, what is your accuracy. See, Devadev is on the top right now. Very very good, so proud. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ सभी को. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेटिंग सुपर कलाम इन टू योर प्रेपरेशन. होमवर्क करना मत भूलना, कॉमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है. So we have studied about fundamental duties and DPSPs being added by 42nd Amendment Act. Now the next is it also increased the tenure of Lok Sabha and state legislative assemblies. पहले 5 साल था, फिर 6 साल कर दिया गया 42nd Amendment Act के द्वारा, because such major changes happened ना 42nd Amendment Act की वजह से. That is why it is known as the mini constitution. This is a very important topic for prelims as well as for your mains examination. काफी important है. 10 मार्कर का easy question यहाँ से बन सकता है बहुत easily. Then we have the 44th Amendment Act. Now this is again very important. ये 42nd and 44th तो बहुत important है. इसको आप mark कर लो. Just star mark these two. Okay. Now what 44th Amendment Act 1978, after 2 years it was passed, what it did? It restored the original term. It was 6 years ना, वापस से 5 years कर दिया. ठीक है, of Lok Sabha and State Legislative Assembly, the term was again, it was set back to 5 years. Then with respect to national emergency, there is a term called internal disturbance. It was replaced by armed rebellion. Okay, in which case the national emergency can be declared. तो उसमें एक term आता है internal disturbance, उसको हटा दिया गया. And another important point is कि president declares na national emergency, but the clause was added that president can only declare national emergency only on the cabinet's written recommendation.
कैबिनेट या सीओएम अगर रिटन रिकमेंडेशन देता है तभी जाकर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहीं से ना क्रिटिसिज्म निकल कर आता है कि प्रेसिडेंट का खुद का से क्या है, व्हाट इज प्रेसिडेंट्स ओन से और ओन थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्लॉज। एक बहुत ही मेजर चेंज हुआ दैट अर्लियर देवर 11 फंडामेंटल राइट्स, अब यहाँ पर आप देखोगे राइट टू प्रॉपर्टी was deleted from fundamental rights and it became a legal right. Okay, it also restored some of the powers of supreme court and high court, तो वो भी एक important point हो जाता है इसके अंदर। then we have 1985, we had the 52nd amendment act। अब इसके बीच में काफी amendments हुए हैं but we are studying the major ones, हम अपने major amendments पढ़ रहे हैं जो PYQs में repetitively पूछे गए हैं। So 52nd Amendment Act is also important because it added the 10th schedule. 10th schedule किससे related है? It is related to, you have to tell me in the comment section. 10th schedule is related to, जल्दी से बताओ, फटाफट से comment करो अभी के अभी, जल्दी से। Yes, it is related to defection, political defections. It also talks about the anti-defection law. It is designed to prevent political defections from one party to another party। एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में घुस जाना, दूसरे से छोड़ के तीसरे में घुस जाना, या वापस फर्स्ट में आ जाना। इस तरीके से क्या होता है कि the trust of citizens also comes down, right, on the government. So to prevent that, 52nd Amendment Act 1985 was passed, which added the 10th schedule. So it talks about disqualification on the ground of defection of parliamentary members. So this is again very, very important. And then after 52nd Amendment Act, you will see 61st Amendment Act after 4 years, 1989 में। ये बहुत important है because elections are going on now, you can expect a question। आप 98% एक question expect prelims में कर सकते हो यहाँ से। Voting age was increased, okay, it was decreased। पहले 21 था, then it became 18, तो voting age को decrease किया गया, 18 की age से अब vote किया जा सकता है। एंड 69th अमेंडमेंट एक्ट, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी इलेक्शंस आर गोइंग ऑन एंड आप पार्टी जो है वो अभी क्राइसिस में चल रही है एंड आप पार्टी इज इन मेजरली दिल्ली में है, राइट, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, here Delhi was made a national capital region, NCR। This act also made provision for a legislative assembly and a council of ministers for Delhi। So this is again important, ये भी काफी important है, ठीक है। 69 तो काफी बार न्यूज में रहता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत से रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड देयर इज अ सेपरेट चैप्टर ऑन दीज टू एक्ट्स इन योर इंडियन पॉलिटी बुक, एम लक्ष्मीकांत बुक, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट विच इज रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड वी हैव द 74th अमेंडमेंट एक्ट which is related to urban local bodies which is also known as ULBs। इसमें ना 12th शेड्यूल ऐड किया गया था, ठीक है, in this particular 74th amendment act for managing urban local bodies, and in 73rd now 11th schedule was added। So this question can also come कि 11th schedule was added by which of the following amendment act? It was added by 73rd। 12th schedule was added by 74th। 10th schedule was added by 52nd। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अभी रिसेंटली इन 2023 इन प्रीलिम्स अ क्वेश्चन केम व्हिच वाज रिमूव्ड बाय यूपीएससी आल्सो ऑन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 वाज वन ऑफ द ऑप्शंस। तो इसमें काफी कंफ्यूजन हुआ था, व्हाट इज 86th अमेंडमेंट एक्ट। सी दिस अमेंडमेंट एक्ट रिलेट्स टू द राइट टू एजुकेशन ओनली, ठीक है, अंटिल द एज ऑफ 14, अर्ली चाइल्डहुड केयर अंटिल द एज ऑफ 6, तो ये राइट टू एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर से रिलेटेड है 86th अमेंडमेंट एक्ट। सो इट इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, चिल्ड्रन एंड देयर राइट्स, सो दैट इज व्हाई इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट मेजर अमेंडमेंट एक्ट्स जो कि न्यूज में रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अमेंडमेंट्स, व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ अमेंडमेंट्स टेक प्लेस, प्रोसीजर क्या है वो कैसे समझें। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। देखो क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट अमेंडमेंट ना, फर्स्ट पॉइंट इज कि लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, हाउ इन डिफरेंट वेज अमेंडमेंट्स कैन टेक प्लेस। तो अगर हम देखें अमेंडमेंट्स को, देयर आर टू बेसिक टाइप्स, सिंपल मेजॉरिटी एंड बाय आर्टिकल थ्रू आर्टिकल 368। इन सिंपल मेजॉरिटी व्हाट हैपेंस, आई कैन गिव यू एग्जांपल्स आल्सो, जैसे इलेक्शन होते हैं ना पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, उसमें सिंपल मेजॉरिटी यूज होता है। इवन इन सिटीजनशिप, इफ यू आर एक्वायरिंग सिटीजनशिप, यू आर टर्मिनेटिंग सिटीजनशिप, सिंपल मेजॉरिटी विल बी यूज्ड। मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, सदन में 50% से जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है, पीएनवी हैं, बैठे भी हैं और वोट भी कर रहे हैं,
उनके मोर देन 50% वोट्स, उसमें नो स्पेशल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली दिस इज रिक्वायर्ड, सिंपल मेजोरिटी हो गया. But if you're trying to amend under Article 368, where you cannot touch the basic structure doctrine, there are two ways to bring about the amendment. Special majority of parliament. What happens here? Majority of total membership of each house. हर सदन की, लोकसभा एंड राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप, and majority of two-third of members of each house who are present and voting. हर हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में एटलीस्ट टू थर्ड पीपल शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग. Okay, for example, in this case, what can be amended using this power? Directive principles of state policy, fundamental rights को अगर amend करना है तो ये special majority use होती है under article 368. And then there is another kind of amendment if you want to amend seventh schedule. So for that case, special majority of parliament and ratification of half of the state legislature is required. मतलब acceptance of half of the state legislature is required in this case. अगर आपको federal structure में, I will also write, if you're trying to bring amendment into the federal structure of the constitution, then in that case ratification of half of the state legislature is important. It is a must. ओके, तो इसको ना, इस चार्ट को जरूर अपने रजिस्टर में बना लेना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी डायरेक्ट. क्या होता है कि इट कैन बी फर्स्ट स्टार्टेड ओनली बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बिल. या तो आप लोकसभा में और इन राज्यसभा यू इंट्रोड्यूस अ बिल. देन द बिल विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय अ मिनिस्टर or by a private member. That is why in news you will see that a private member bill has been introduced, है ना. शशि थरूर जी इंट्रोड्यूस कर रहे थे बिल कुछ साल पहले तक. Now, it does not require a prior permission of the president. But this bill must be passed in both the houses. लोक सभा और राज्य सभा दोनों में ही पास होना चाहिए, ठीक है, by special majority. That is majority of total membership of each house and two-third people present and voting. And each house has to pass the bill separately. If there is any kind of debate between the two house, any kind of, you can say, non-agreement between the two house, then there is no provision for joint sitting. कोई provision नहीं है कि साथ में बैठ के चलो वार्तालाप कर लेते हैं, solve करते हैं. No. If the basically the bill which has been introduced, if it seeks to amend the provision of constitution, then federal structure में change आ रहा है तो ratification is required in this case. Then what happens when both the houses are passing the bill? Then it will be presented to the president. President अपना assent जैसे ही देते हैं वो bill constitutional amendment act बन जाता है. So this is the basic procedure when it comes to amending the Indian constitution. Now here I have a question for all of you. ये question पूछा गया था prelims में. It's a prelims related question by the way. And you have only 1 minute to answer this question. जल्दी से अपना आंसर बताओ. इस question को ध्यान से पढ़ना. I am giving you 1 minute का time to read this question and tell me your answer. जल्दी से. Now, just now we have studied that there is no provision for holding a joint sitting of two houses for the purpose of passing a constitutional amendment bill. ये तो statement बिल्कुल correct है. फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ देखें, यहां पर हमने पढ़ा था, वी हैड स्टडीड ओवर हियर दैट इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर ऑल्सो, मेंबर ऑफ द हाउस ऑल्सो, ठीक है. इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू रीड द स्टेटमेंट्स एंड यू मार्क योर आंसर. इस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व. तो अगर आप फैक्चुअल क्वेश्चन भी देख रहे हो, इफ यू आर रीडिंग इट इन द बुक, मेक श्योर यू आर मेकिंग माइंड मैप. बिकॉज वेन यू मेक माइंड मैप लाइक दिस, जिस इस तरीके से माइंड मैप बनाते हो, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू टू फैक्चुअली मार्क दीज क्वेश्चंस करेक्ट. और ये जो 4 नंबर आएंगे ना, ये फैक्चुअली बिल्कुल करेक्टली आप मार्क कर सकते हो. दीज आर द मोस्ट इजी एंड फ्री 4 मार्क्स दैट यू कैन गेट, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई विल ऑल्सो शेयर सम इंपॉर्टेंट जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स. केशवानंद भारती केस तो वी ऑलरेडी हैव स्टडीड. This is the Minerva Mills versus Union of India case. Now, what happened here? They said, Supreme Court ruled that Parliament cannot take away the power of judicial review. What is judicial review? If the Supreme Court has passed a particular judgment, it can go back to the judgment, revisit it. अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको change भी किया जा सकता है. That is known as judicial review. है ना? Once a judgment has been passed, it can be reviewed back again. That power cannot be taken away by the parliament. It is a part of basic structure. तो judicial review inherently basic structure of doctrine का part बन गया.
Then we have the L Chandra Kumar versus Union of India case 1997. Now it talked about tribunals. Tribunals कौन से आर्टिकल से डील करता है? 323A, 323B. They said, Supreme Court said basically that tribunals are not a substitute for power of judicial review. कि आपने ट्राइब्यूनल में केस भेज दिया, वो सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव मान लिया. नो. Okay. Then it also said that it is not a substitute for the power of judicial review that constitution has bestowed upon the high courts. High court can also review their own judgments. And then we have the IR Coelho versus State of Tamil Nadu case. Supreme Court here said that Parliament cannot increase the amending power by amending the Article 368. आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को डैमेज नहीं कर सकते हो, आप अपनी अमेंडिंग पावर को बढ़ा नहीं सकते हो, वो गलत है, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ही अगेंस्ट चला जाएगा, है ना. बिकॉज सी गवर्नमेंट ऑल्सो वॉज ट्राइंग टू फाइंड द लूप होल्स ना टू गिव इट सेल्फ मोर पावर्स. And then we have the 99th Amendment Act, recent 2014 का जो 99th Amendment Act रहा है, it talked about National Judicial Appointment Commission. इसमें कहा गया कि this commission should be struck down by the Supreme Court. Why? Because it is hampering or tampering with the independence of judiciary. Independence of judiciary is also a part of basic structure doctrine. Please write it down. ओके तो अलग से गवर्नमेंट एक कमीशन बना रही है, आप सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस उसे छीन कैसे सकते हो? दिस इज नॉट अलाउड. सो दैट इज वाई दिस अमेंडमेंट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. तो ये था हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्लास. अब आपको ये बताना है, फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू सॉल्व द होमवर्क विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सेकेंड थिंग इज जो हमने PYQ किया उसका आंसर आप मुझे बताओगे कॉमेंट सेक्शन में विद एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट टू राइट द एक्सप्लेनेशन. एंड थर्ड इज यू हैव टू लीव योर फीडबैक कि नेक्स्ट जो क्लास है वो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्लास बी ऑन. ओके so based on your preparation and based on your understanding you can also share your feedback. Thank you so much everyone. Make sure कि आप होमवर्क जरूर सॉल्व करो आज का. Enjoy and keep revising.